Good morning to everyone present here. Respected dignitaries, esteemed judges, faculty members, participants, and dear students. A very warm welcome to the Viksit Bharat Youth Parliament, South Goa Nodal District, being hosted today at Don Bosco College of Engineering, Fatorda. India's youth represent energy, ideas, and the power to shape the nation's future. The Viksit Bharat Youth Parliament is an initiative that provides a platform for young voices to express their thoughts, debate important issues, and contribute their vision towards building Viksit Bharat by 2047. My name is Ashley, and I feel honored to be your host for today's inaugural ceremony. To begin this program, I kindly request our respected dignitaries to take their seats on their dais. I request Shri Damodar Shirodkar, Chairperson, Marham Municipal Council, our Chief Guest. Father Wilfred Fernandez, Director, Don Bosco College of Engineering. Dr. Nina Panadikar, Principal, Don Bosco College of Engineering. And Dr. Nitin Samant, Coordinator, NSS Cell, Goa University, to kindly grace the dais. Let us welcome our dignitaries with a warm round of applause. In Indian tradition, nurturing a plant symbolizes growth, prosperity, and the nurturing of ideas. To formally inaugurate the event, I request our esteemed dignitaries to kindly come forward for the watering of the plant ceremony.
Thank you, dignitaries. Now, as a token of our respect and gratitude, we will have a potted plant welcome for our honored guests. I request the volunteers to kindly present potted plants. Let us once again acknowledge our guests with a round of applause. To formally welcome everyone and share a few words about the significance of this gathering, I invite Dr. Neena Panindekar, Principal of Don Bosco College of Engineering, to deliver the welcome address. Ma'am, the stage is yours. Very good morning to all present here. It is my great pleasure to welcome you all to Don Bosco College of Engineering, Fatorda, for this program, Viksit Bharat Youth Parliament, South Goa Nodal District. I extend a very warm welcome to our Chief Guest, Sri Damodar Shirodkar, Chairperson of Arga Municipal Council, and our distinguished dignitaries on the days, Father Wilfred Fernandez, Director, DBCE, Dr. Nitin Saban, Coordinator, NSS South Goa University. We are indeed truly honored by your presence. I also warmly welcome all the participants gathered here, all the judges present here, faculty members and students who are there with us here today on this very important day that we are having this celebration today. The Viksit Bharat Youth Parliament provides a very valuable platform for young minds to express their ideas, discuss national issues, and contribute their vision for Viksit Bharat 2047. It indeed encourages leadership, civic awareness, and meaningful dialogue among the youth of our country. I wish all the participants present here the very best for the discussion and deliberation ahead. May this platform inspire new ideas and shared vision for a stronger and more progressive India. Thanks to our faculty coordinators, Dr. Chetan Gaukar and Professor Satish Kapoor. I think they deserve a big round of applause for Thank you once again. Have a lovely day today. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, ma'am, for your inspiring words. I now invite Father Wilfred Fernandez, Director of Don Bosco College of Engineering, to address the gathering. My dear friends, on behalf of the Don Bosco Engineering College at Fatorda, I'm Neena Panindekar, our principal, our faculty members, our staff and students here. I'm very happy to welcome our chief guest for this morning, Mr. Damodar Shirodkar, the chairperson of Margaon Municipal Council, and also Mr. Nitin Saban, Dr. Nitin Saban, coordinator of NSS South Goa University, and to all of you members who will be participating in this Viksit Bharat Youth Parliament South Goa Nodal celebration. Okay, I'm sure, like Don Bosco, who created and nurtured youngsters to bring in the best out of them, likewise, our very own India has put in the responsibility to our youngsters. Okay, and I'm sure the best can come out with very creative and innovative minds. Well, this is a platform that is given to you. There are a lot of people, senior people, who bring in a lot of ideas and a lot of resolutions and implement things that are in their scope. Well, this is an opportunity for youngsters to bring in what is in their mind. Okay, and it is a build-up. Just now, at the beginning of this program, we had a very symbolic
watering of that plant. Okay, it is symbolic of a youngster there who is nurtured by putting in that water. Okay, a lot of you get in a lot of inputs from your faculty members and from your teachers, from your seniors. Well, taking all that, okay, and bring out the best that will benefit you and benefit greater India. Thank you and God bless. Thank you, Father, for your valuable message. To help us understand the vision and structure of Viksit Bharat Youth Parliament, I invite Mr. Dr. Nitin Sawant, Coordinator, NSS Cell, Goa, to present an overview of the event. Honorable Chief Guest, Shri Damodar Shirodkar, Chairperson for MNC, respected Principal, Dr. Nina Manavika, Father Wilfred Fernandez, who is the Director, my NSS Program Officer Chaitanya, and also I should not forget Harrison Kota, who has started this particular youth parliament. Instead of giving an overview of the youth parliament, I have few messages to this youth standing here, sitting here. Your voices should not be a noise, it should be the impact. You are a nation builder, and this youth parliament is one such event which Honorable Prime Minister initiated to build this nation to youth. I'll give you a few examples. I would take little time from all of you with your permission. I'm in this business for last probably 35 years. Started my NSS from 5th standard. And I've seen how our Goa, forget about country, how Goa has been in the last 45 years. We keep blaming each other. We keep blaming government, we keep blaming the central government, we keep blaming the municipality, we keep blaming panchayat. Can't we do something? Can't we do something? We don't have power. I believe that this platform is very, very important. And you all youth sitting here, and let me tell you something, we have a great power in politicians. But to do something good, don't take me wrong. Tomorrow you should not be on the placard on the road and say that Dr. Nitin Sawant said, no, we have power, we should block everything. No. I'm not talking in terms of negativity. I'm talking about how this nation, how this state can have a good leadership. It's very important. I'm not talking anything negative. Please don't take my message wrong. Today, if I look at this girl, I should have something in a good way. If I have some bad intention, I should think about my sister, I should think about my wife, I should think about my mother. That is how you need to build yourself. Now, if I tell you about as a youth, we have a lot of powers. If I tell you my own ladder, how I have climbed, and one can do that. You all can do that. I am actually an automobile engineer by profession. My father had a business, and my father said, "Who is going to look after the business?" So I did my automobile engineering, and today I fell in love with snakes. After completion, I went into doing into BSc. No link of science. Honestly telling you here, standing here, I think it's recording also. After my BSc,
I did not look back. I did my MSc, I did my PhD, and today I'm a professor in life science. I'm teaching biological science. That's the power of thinking. Many people said, even my own professor said, you don't understand zoology. I proved myself. And there is one saying in Marathi. Sorry to put this in Marathi. I hope most of you must be understanding Marathi. I'll explain in English also. Sir, Shirodkar sir, तुमका कळले. निंदकाचे घर शेजारी असावे. निंदकाचे घर शेजारी असावे म्हणजे काय? The person who criticizes you should be your neighbor. And if it is within your workplace, take it with the positivity. Don't fight with that person. Say thanks to him. I am a product of that. Till the time of people who criticize man, I am making one step ahead, a ladder to climb that. And this is what youth power. So I believe that you all have gathered here. You all have something to say. And that is what in the beginning, as I said, your voices should not be a noise. It should be the impact. Nobody is greater than you. Let me tell you, because you are going to breathe air in this Goa another many years. I don't know how long I am going to live. Probably nowadays we have seen, and Sir Abdul Kalam has predicted that our lifespan will be 35, the average lifespan. आज आम्ही म्हणतात की 90 वर्षा जगलो, 80 वर्षा जगलो, but 35 वर्षा जगलो will be the great. And that is what we are actually trying to prove, what Sir Abdul Kalam has said. I think I will not waste much time. Sir Shirodkar also must be having some assignments, all of you have assignments. But I believe that youth is a great power, and I have got this opportunity to Goa University as an NSS coordinator to touch your hearts, to give my message why one can do miracles if you have a willpower. Do good, try to be vocal. If something is going wrong, correct it, don't fight, don't come on the road with the placard. Have a debate, have a discussion. If something is happening in Marga or Marmagoa, something is going, meet the chairperson, have a debate. As a youth, you have full right. It's a democratic power. Okay? I think I wish you all the best. I thank Madam Principal, also Father. His institution has been, selected by the central government, and they are very helpful. Very happy that this event is happening in your institution, sir. So I believe that this journey will go a long way. I was just in Portugal. I am returned from Portugal. Amazing. I was just talking to ma'am. It's amazing. The thinking power, we are 200 years behind. Sorry to say this, but I think we need to think how we can improve our thinking, how we can involve in building a good society. And this is the platform, a youth parliament is a platform where thank the central government and the state government, Honorable Chief Minister, for initiating these ideas and taking this initiative further. I wish you all the best and also the institution for giving this platform to me for speaking. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir, for that insightful overview. Now I invite Dr. Chetan Gankar, NSS Program Officer of DBCE, to introduce and welcome our esteemed panel of judges. In order to judge today's competition, we have 5 eminent judges with us. Starting with the first judge, Ms. Nelly Rodriguez. She is a distinguished educator and public leader who served as chemistry lecturer for 36 years at MES High Secondary School, Zuari Nagar, later becoming its principal and currently serving as manager of MES. She has also had a remarkable public service career, being elected 4 times as Zilla Panchayat member and twice as the chairperson of South Goa Zilla Panchayat.
and has actively promoted women's leadership through the Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan. Her long experience in education and grassroots governance makes her an insightful evaluator for today's youth parliamentary session. I request our volunteer to welcome. Second judge for today is Mr. Dhiraj Harmalkar. Mr. Dhiraj Harmalkar is a senior journalist and feature reporter currently serving as senior reporter and editor with Lokmat in Madgaon. With earlier experience at Navin Times, Herald, Gomantak Times and Gomantak Marathi Daily, he has extensively covered issues related to governance, development and public policies in Goa. Holding a master's degree in political science and international relations from Goa University, he brings valuable insight into democratic discourse and public debate, making his presence particularly relevant for today's Parliament platform. I welcome you. Our next judge for today is Mr. Nrupen Desai. He is a youth leader and social activist, actively involved in community engagement and public outreach initiatives in Goa. With an academic background in sociology from Goa University, he has contributed to youth guidance programs, social awareness initiatives, and community development activities, and is associated with organizations such as International Human Rights Association Goa Chapter. His engagement with youth and social issues align closely with the spirit of today's youth parliament. I welcome you. Our next judge for today is our own alumni, Ms. Johar, who is a consulting civil engineer and an elected public representative serving as councillor of Ward number 15 at Kursare, Fatorda Municipal Council, having been elected twice and previously serving as vice chairperson. With her background in civil engineering from our own college, that is Bosco College of Engineering, and postgraduate specialization from GEC, she brings practical experience in local governance, urban development and public administration, offering valuable perspective to discussions of policy and civic leadership. I welcome you, ma'am. Last but not the least, everyone's favorite, Austin Fernandez, Director of Bosco Youth Services, has been deeply involved in youth empowerment, leadership formation, and community engagement programs across Goa. Through his work with young people, he has consistently encouraged active citizenship, responsible leadership, and social participation, values that strongly resonate with the objective of Youth Parliament Initiative. I welcome you, ma'am. We now come to the most awaited moment of this inaugural ceremony. It is my honor to invite our chief guest, Shri Damodar Shirodkar, Chairperson of Margao Municipal Council, to address the gathering and share his thoughts with the young participants here today. Sir, we request you to kindly deliver the chief guest address. Good morning, students. Good morning, everybody. Respected Father Wilfred Fernandez, Principal of this college, Madam Neena Palandikar. Just now, wonderful thoughts and wonderful speech by Dr. Nitin Sawant.
my friend, dynamic lady of Goa, by Nelly, councillor from Kulturin, press, Dheeraj, the Lord, all the dignitaries, good morning once again to each and everyone. कोंकणी आणि इंग्लिश दोन्ही मिक्स उलयता. आतांच दोतोर सावंतान म्हळें स्टुडंट्स शिकता आसतना इंजिनियरींग करता आसतना सगळ्यान पयलीं म्हळ्यार इन द स्टेट ऑफ गोवा जो चलो हांगा सेकंडरी इंजिनियरींग करता आनी इंजिनियरींग करता आसतना खंयची कॉलेज सिलेक्ट करप, फार्मागुडी वचप आनी खंय वचप, गोंयचे भायर वचप, ते डॉन बॉस्को कॉलेजीन येवप. आय थिंक इन द स्टेट ऑफ गोवा, इन द एंटायर कंट्री, just now Dr. also said, this college has given some recommendation by the national level. So गोंयांनी डॉन बॉस्कोची कॉलेजीचे नाव सगळे रिस्पेक्टान घेताच. For that, I will request all the audience to give a round of applause to all the staff. आता उलयता आसतना दोतोरान एक सांगलें की निंदकाचे घर असावे शेजारी. Absolutely correct. Press Anna, he is witness. When I took the charge of the chairperson in 2022, October 12th, October 2022, प्रेसाक एक संवय आसता, कितें जावं ना कितें जावपाचें आसता तें पयलींच विचारपाचें आनी तातूंत धीरजी आशिल्लो. I have taken the charge, I got elected chairperson. म्हाका हाडून चॅराचेर बसयलो. Lot of people came to wish me also. प्रेसान म्हाका विचारलें, कितें विचारलें असो सांगा पळोवया. ताका खबर आहा, ताका सांगता. तूं आज चॅरपर्सन जाला, कितें करतलो तूं? चॅरपर्सन खुर्चीचेर बसून 2 मिनटां बसून जावना. कितें करतलो तूं? पयलींच विचारलें सगळे प्रेसान. ऑल जशें दोतोरान सांगलां तशें आय हॅव गिवन देम आन्सर. जाल्यार शीता पयलीं मीठ कित्याक खातात तुमी? कितें करतलो? जस्ट गिव मी 1 मंथ टायम. ज्या खुर्चेर हांव बसला, ज्या घराच्या खुर्चेर हांव बसला, आय शुड नो ह्या घरान कितें आसा तें. लेट मी जस्ट स्टडी. आनी आज पर्यंत तांकां सांगूना हांव कितें करतलो म्हणून तें. लास्ट 6 म्हयने पयलीं म्हाका तें विचारपाक आयलें. परत ते प्रेस घेतलो तांकां सांगलें हांवें. आय गॉट गोंयांत 2 कावन्सिलरांक गव्हर्मेंटाचो स्टेट लेवल एवॉर्ड वन ऑफ द बेस्ट कावन्सिलर आनी बेस्ट क्लीन वॉर्ड. तातूंत भितरलो एक हांव. When I got that award, I told press, तुम्ही मला 3 वर्सां पयलीं विचारिल्लें तूं त्या खुर्चेचेर बसून कितें करतलो. This is the answer government has given to your press. This is the answer given you by the state of the government, which I got best councillor, best clean ward in the state of Goa. आमकांय खबर ना 5 महिने गव्हर्मेंटचे टॉपमोस्ट 5 ऑफिसर्स 5 महिने सर्वे करताले. They roam entire Goa, all the municipal councils. कोणाक खबर आशिल्लें गणेश चतुर्थीच्या पयलीं. And they have selected me and from Balapai Mr. Natekar, he is also Balapai municipality chairperson. दोगांकय 2 अवॉर्ड मेळ्ळे. सो ही हांव गोश्ट तुमकां कित्याक सांगल्या, सदांच आपूण कितें करतलो हें पयलींच कांय उलोवप दाखोवप ना. तशें दोतोर नितिनान सांगलें, मेन म्हणल्यार तुका पयलीं व्हील पॉवर आसपाक जाय. एज अ चेअरपर्सन, एज अ काउन्सिलर, एज अ पॉलिटिशियन. एक्चुअली गाण्याची खूब, गावपाची, संगीताची खूब आवड आशिल्ली. खंय तरी वयर कितें तरी चुकलें आनी चुकून इंजिनियरींग करतकीर चुकून राजकारणांत पडलो. सो हांवें चिंतून आशिल्लें राजकारणांत पावतलो, काउन्सिलर 4 फावटी जातलो, नगराध्यक्ष जातलो. पूण आय एम रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टुडंट्स. म्हजोय चलो इंजिनियरींग करता, 2nd इयर आसा. हांवें सराक खबर आसा, हांवें भुरगे म्हणटकीर घरांतले भायर सरले म्हणटकीर मातसो
पेरेंट्सांक मातशें उरता चलो म्हणजे एक कावन्सिलर आसा ताजो एक मामाचो पळय मिरामार कलंगूट त्या सायडीन रातचो 12 बायक घेवन चललो आनी फास्ट चलयतालो घरा कडेन येतना एक फुटपाथाक बायक पडली आनी ऑन द स्पॉट इज 23 इयर्स ओल्ड पेरेंट्सान 23 इयर्स भुरग्यांक शिकोवप ल्हानातले व्हड करप आनी एकदां कितें ट्रेजेडी जावन ह्या संवसारान ना जावप इज व्हेरी रिस्की हांवूय म्हज्या चल्याक सपोर्ट करता इतल्या खातीर कारण हांव म्हजे बाबतींत तुमकां सांगता शिकता बाकीचे काय लागना फक्त म्युझिक घेवन बसता ढोल वाजयता शामेळ वाजयता घुमट वाजयता गायता आता तो शिगम्याक कंटिन्युअस 15 दीस बिझी शिगम्याक मंडळेश्वराक ढोल वाजयता हांव ताका प्रोत्साहन करता कित्याक ताजें कांय म्हणना कारण इतलेंच की शिकता आसतना बाकीच्यो संगती धरचे पेक्षा बाकीच्या रॉंग डायरेक्शनान वचचे पडटा म्युझिक तरी घेवन बसता तातूंतच ताजें मायंड तातूंतच आसा सो दीस इज एक बरी गजाल सो आय एम रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टुडंट्स जे करून इतपर्यंत महत्वाची बरी कॉलेज सदांच आमी डॉन बॉस्को कॉलेजीन इन्स्पेक्टर पळयतात मडगांवकार तरी बाकी गोंयचे लोक थँक्स टू फादर ऑल्सो वेल डिसिप्लीन आनीक कितलेशेच प्रोग्रामूय तुमी करतात सो स्टुडंटांक एकच अपील करता इंजिनियरींग शिकता आसतना तुमी जें कितें शिकतात ताजेर भर दिवची ती दिवचीच पूण एकच लक्षांत दवरात जे पेरंट्स तुमचे खातीर सॅक्रिफायस करतात जे पेरंट्स आपलो लायफाचो बहुमेल वेळ तुमचे खातीर घालतात डोंट गो इन द एनी रॉंग डायरेक्शन्स नेगेटिविटी ही केन्नाच शिकप आसना you should be always positive thoughts, positive intentions, positive ways. ते तुमकां कितलेशेच मुखार सांगपाक जायना हातूंतलो मुखारलो पळय पयला जसो मुख्यमंत्री जावंक शकता कोणी प्रायम मिनिस्टरूय जावंक शकता मनशाच्या नशिबान खंय कितें बरयलां तें आपल्याक खबर आसना एक दीस म्हजे बाबतींत तेंच घडलें हांव कावन्सिलर जातलो चेअरपर्सन जातलो हांवें सपनाक पसून चिंतना एक दीस मडगांवच्या आमदारान आपोवन व्हेलो आय गॉट इलेक्टेड 4 टायम्स आपोवन व्हेलो जावं तुमकां मार्च वॉर्ड नंबर 20 इलेक्शना उपरांत म्हणजे सर तूं कितें बरयता हांव म्हणजे सिव्हील लायनीन आसा कन्स्ट्रक्शन लायनीन आसा म्हणजे धंद्याचेर मार ना धंद्याचे मागीर तुका आपण हेल्प करतले आय गॉट इलेक्टेड फर्स्ट समवेअर इन 2005 आनी तातूंतल्यान राजकारणाचो प्रवास सुरू जालो आनी प्रवास सुरू जातना गेली 3.5 वर्सां एज अ चेअरपर्सन म्हणून काम करता 2 म्हयने उरल्यात मेयाक परती इलेक्शन जावपाचें आसा सो चड कांय उलयनासतना आय वेरी मच थँकफूल टू ऑल द डिग्निटीज ऑन द डेज मॅडम नीना बाळंदेकर फादर Fernandez for giving me this opportunity as the chief guest and allowing me to speak some words. Thank you very much. Thanks very much. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring and encouraging words. As a token of our appreciation and gratitude, we will now present mementos to our respected dignitaries and judges. I request the volunteers to kindly assist. As we approach the conclusion of our inaugural ceremony, I invite Mr. Satyesh Kapadkar, coordinator of Viksit Bharat Youth Parliament
South Goa to deliver the vote of thanks. Dignitaries on and of the days, and my dear students, on behalf of the Bosco College of Engineering, I take this opportunity to thank the chief guest of today's function, Shri Damodar Shirodkar, Chairperson, Margao Municipal Council, for gracing this occasion in spite of his busy schedule and also his inspiring speech. Thanks to Father Alain D'Souza, who could not attend today's function for his cooperation. Thanks to our director, Father Wilfred Fernandez, for his constant motivation and encouragement. Thanks to Father Leo Pereira for his all support. Thanks to our principal, Dr. Nina Panandikar, for her constant encouragement, and she was after us, helped us in planning of this event. Thanks to Nitin Sawant, who is the coordinator of NSS Goa University, for blessing this function. A word of gratitude to all the judges and also to all the participants for making this function a grand success. Thank you one and all. God bless you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, kindly rise for the national anthem. This concludes the inaugural ceremony of the Viksit Bharat Youth Parliament, South Goa Nodal District. We now proceed with the competition sessions. Thank you and have a wonderful day ahead. I request the dignitaries, judges and staff to go to the pantry for the refreshment. Participants are requested to collect their snack boxes from the snack counter. Registration counter. All the participants kindly make a note. All the participants for the competition kindly make a note. Collect your snack boxes from the registration counter, and the competition will be held in the adjacent hall next to this seminar hall. The seminar hall 1 on the other side, not here. Okay, the venue is changed for the competition. Kindly report in 10 to 15 minutes on the other side of this hall. Thank you. मागे सेटअप है कर त्या ठेवर पाहिजे काढ मग ना ते घेऊनच रे तुझं घेऊनच Hello guys, welcome to my vlog. Say hi. Say hi guys. Jay. Politician, Subhai, say hi. Hello. Say hi. Ashley, say hi. Ashley must be रे फोटो काढी नसता अरे हो मुगेलो घे फोन तू तिला कॅमेरा 1.5 लाख गेल मग
the time, okay, before the time. So utilize. Serial number 1 is absent, so serial number 2, Tamanna. Serial number 2, Tamanna, please come forward. Sure. हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्कार, आज मैं तमन्ना आपके सामने भाषण देने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। आज मैं आपसे किसी इतिहास की धूल भरी कहानी का पन्ना नहीं, बल्कि भारत की वह लोकतंत्र की वह चीख साझा करने आई हूँ जिसे 50 साल पहले दबाने की कोशिश की गई थी। साल था 1975। एक रात में संविधान मोड़ कर दिया गया, एक रात में आवाजें अपराध बन गई, एक रात में सवाल पूछना देशद्रोह कहलाने लगा। इसे कहते हैं आपातकाल। सोचिए, जब अखबारों के पन्ने खाली थे, जब जेलें विचारों से भरी थी, जब कलम कांपती थी और जुबान से हटती थी, यह सिर्फ सत्ता का फैसला नहीं था, यह लोकतंत्र की रीढ़ पर किया गया प्रहार था। आज 50 साल बीत गए, लेकिन सवाल आज भी खड़ा है कि लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द है जब उसे हर पीढ़ी को रोज बचाना पड़ता है। आपातकाल हमें एक कड़वी सच्चाई सिखाता है कि लोकतंत्र सबसे मजबूत तभी होता है जब जनता जागरूक होती है, क्योंकि अगर जनता सो जाए तो सत्ता निर्कुंज हो जाता है, अगर सवाल चुप हो जाए तो अन्याय बोलने लगता है। याद रखिए, लोकतंत्र की हत्या बंदूक से नहीं होती, वह चुप्पी से होती है। आज हमें जेल में नहीं डाला जाता, हमें उलझाया जरूर जाता है। आज अखबार बंद नहीं होते, मगर सच को शोर में जरूर दबाया जाता है। आपातकाल की 50वीं वर्षी हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रीढ़ एक युवा से बनती है, एक युवा से बनती है। और याद रखिए, लोकतंत्र एक बार छीना गया था, दूसरी बार छीना गया तो शायद लौटकर ना आए। लोकतंत्र की हत्या बंदूक से नहीं होती, ये याद रखिए, वह एक चुप्पी से होती है। हाँ, आज मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसकी होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश कभी सप्तम शिवम सुंदरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा है। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में तो सारा जहां जय हिंद कहेगा, जय हिंद कहेगा। आपातकाल की बात करें तो याद रखिए, संविधान सिर्फ किताब नहीं, संविधान सिर्फ किताब नहीं, यह हमारी ढाल है। संविधान सिर्फ किताब नहीं, यह हमारी ढाल है। अभिव्यक्ति सिर्फ किताब नहीं, वह हमारी सांस है। अभिव्यक्ति सिर्फ किताब नहीं, वह हमारी सांस है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Now I would like to call upon serial number 4, Abhigyan Roy. Judges, please note serial number 4, Abhigyan Roy, as roll number 3 will be appearing later. सदियों की ठंडी बुझी राग सुख बुगा उठी,
सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दोहरा समय के रथ का घघर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 1960 में रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी पंक्तियों ने 1975 में जून की तपती सड़कों पर प्रत्यक्ष रूप धारण किया था और उसी देश के साथ परम पूज्य निर्णायक मंडल एवं नव भारत के तमाम अधिनायकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज मैं 50 वर्ष बाद इतिहास के उन पन्नों पर से धूल हटाना चाहूंगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने 1971 की आयरन लेडी को सत्य की कुर्सी से गिराकर कटघरे में खड़ा कर दिया था। तब उनकी तानाशाह ने लोकतंत्र की दामन पर ऐसा तांडव किया कि विश्व की सबसे विशाल लिखित संविधान का नरसंहार हुआ। पत्रकारों से पत्रकारिता छीन ली गई, विपक्ष के नेताओं को जेल में भरा गया, जनसंख्या नियंत्रण के नाम में नागरिकों का शोषण हुआ और हर नगर गली गांव से त्राही नाम सुनाई दी, हर दीवारें विद्रोही विज्ञापनों की लाली से रंग उठी। किंतु महोदय, आज आजादी के 79 वर्ष बाद 2026 में जब विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो क्या आवश्यकता है उस दौर को याद करने की जब 1975 की उस रात में हमारे सोने की चिड़िया को पिंजरे में बनकर अनुच्छेद 19 का गला घोटा गया था। आज सोने की चिड़िया के पंखों पर 146 करोड़ सपनों के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप देश, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स, 21 लाख से अधिक नौकरियों का अद्भुत श्रृंगार देखकर फ्रांस के राष्ट्रपति भी बोल उठे, व्हाट इंडिया हैज बिल्ट नो अदर कंट्री कैन। आपातकाल के पुनः आरंभित होने की संभावना को केवल इस देश की युवा शक्ति ही समाप्त कर सकती है। किंतु मान्यवर, इस देश का युवा 6 इंच के स्क्रीन को घर बनाकर विदेशी विचारधाराओं की गोद में वासियां ले रहा है। 30 सेकंड के मनोरंजन को देखकर अपने जड़ों से जुड़ाव पर आपातकाल लागू कर चुका है। देश का युवा नशे का धुआं हटाकर अभिमन्यु बनकर ललाट पे अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनामम तु वसुधैव कुटुंबकम का संकल्प लिए बढ़ेगा, तब धर्मवाद, आतंकवाद, जातिवाद का चक्रव्यूह भेजकर मेक इन इंडिया के शेर को गर्व से दहाड़ाएगा और भारत मां के चरणों पर आपातकाल की बेड़ियां नहीं बल्कि मुकुट पहनाया जाएगा जगत जननी का। और आखिर में मेरी पंक्तियों से अंत करना चाहूंगा, मेरी दिल की धड़कन सुनकर तो देखो आर्यभट्ट का हुंकार गूंजेगा, मेरी चिता की लपटों में झांक के देखो बलिदान का अंगार दिखेगा, मेरी अस्थियों को मां गंगा में बहाकर तो देखो बहती धाराओं में तिरंगा खिलेगा, बहती धाराओं में तिरंगा खिलेगा। धन्यवाद। Please note, next we have serial number 26, Suzanne Andra. I repeat, serial number 26, Suzanne Andra. Good day to all the judges. Myself Suzanne Andra. Respected judges, teachers and fellow young citizens, I stand before you today to share my thoughts on the topic 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. On the midnight of 25th June 1975, the world's largest democracy suddenly went silent. Fundamental rights were suspended, the press was censored, and thousands of political leaders and activists were arrested. The period in history is known as the emergency in India, declared by the Prime Minister Indira Gandhi. For 21 months, India experienced one of the most challenging phases in its democratic journey. Citizens who once freely spoke their opinions were now suddenly restricted. Newspapers were forced to seek approval before publishing news, and many leaders were imprisoned without trials. However, remembering the emergency, today is not about recalling a dark chapter in the history. It is about understanding the lessons that the emergency gave to us. The first lesson is the importance of fundamental rights, such as the freedom of speech, liberty, and expression. They are just not constitutional words, they are the heartbeat of democracy. When these rights are suppressed, the voices of the people are silenced. The second lesson is the importance of responsibility, leadership, and strong instructions. The judiciary, the media, and the parliament must remain independent and courageous in protecting democratic values.
Dr. B.R. Ambedkar already warned us. However good a constitution may be, but those who implement, if they are not good, it will be proven bad. These words remind us that the democracy depends not only on the laws, but also in the character of the responsibility of those who govern us and those who participate in it. The third lesson is the power of the people. In 1977, when elections were finally held, the voices of the people were heard. That movement proved that the true strength of a nation lies in its people and the commitment to democratic values. Today, as India moves toward the vision of development in developed India in 2047, we must remember that true progress is not measured by economic growth or technology, but also by the strength of the democracy, the protection of freedom, and the voices of every citizen. And this responsibility now lies within us, the youth of India. We are not just the future of this country, but we are the guardians of its democratic values. As Thomas Jefferson always says, the price of freedom is internal vigilance. So let us remain vigilant, aware, and responsible citizens, ensuring that the lessons of emergency are never forgotten, and that the voice of democracy in India is never silenced again. With this, I conclude my thoughts. Jai Hind. Thank you. Judges, please note, next we have serial number 5, Pranav Kankar. I repeat, serial number 5, Pranav Kankar. नमस्कार। सभागार में मौजूद माननीय परीक्षक मंडल, शिक्षक तथा विद्यार्थी रूप में मौजूद मेरे सभी युवा साथियों को मेरा प्रणाम। मैं प्रणव गांवकर, शासकीय महाविद्यालय किले का छात्र, आज आप सभी के समक्ष आपातकाल के 50 वर्ष भारत लोकतंत्र के एक सीख इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित है। मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र में संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग नहीं होंगे तो संविधान का कोई भी मतलब नहीं होगा। और ऐसा ही कुछ दृश्य हमें 1975 में देखने को मिला, जब भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा भारत में लोकतंत्र की हत्या कर, लोकतंत्र को चीर कर आपातकाल की घोषणा की गई। यह वह समय था जब भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को खंडन करते हुए, पत्रकारों के प्रश्नों को छीनते हुए और विपक्ष दल के नेताओं को उठाकर जेल में बंद कर देने की यह स्थिति थी। भाइयों बहनों, इतिहासकारों का मानना है कि आपातकाल की घोषणा जब की गई तब सामान्य जनता के अधिकार को पूर्ण रूप से खंडित किया गया। यह कार्य, यह श्रापित दृश्य आज कोई भी न भूल सकेगा। और मेरा मानना है कि जब जब हम अपने अधिकारों से वंचित होंगे, तब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या फिर देश हित में न रहकर ऐसी किसी सरकार को हम वोट देंगे तो आपातकाल जैसी स्थिति ही उत्पन्न होगी। और आपातकाल की इसी स्थिति में हम भारत के लोगों को एक बहुत बड़ी सीख भी दी है। एक बहुत बड़ी सीख दी है कि जब जब हम कोई विचार न करें, ऐसी सरकार को चुनेंगे, तब भारत देश को बहुत बड़ी हानि होगी। यह भारत देश जो विविध परंपरा, विविध संस्कृति, विविध जाति, विविध पंथ, विविध धर्मों से सजा हुआ है, उस देश पर आज भले ही
नागरिकों के बच्चों को यह रखना चाहिए, यह पता करना चाहिए कि इमरजेंसी क्या होती है, जिसमें भविष्य में कोई सरकार यह हिम्मत न कर पाए कि वे अपनी मनमानी से इस राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा करें। इतना संदेश देकर मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Next up we have serial number 6, Saloni Upendra Pal Desai. I repeat, serial number 6, Saloni Upendra Pal Desai. नमस्कार। लगी बेड़ियां जब कलम पर और कैद हुए जब विचार, लगी भेड़ियां जब कलम पर और कैद हुए जब विचार, वरात थी कितनी काली जब सहमा था अधिकार, वरात थी कितनी काली जब सहमा था अधिकार। पर जुल्म की जंजीरों को इस देश ने कैसे तोड़ा था, पर जुल्म की जंजीरों को इस देश ने कैसे तोड़ा था। लोकतंत्र के उस महायज्ञ में जनगण ने रूप मोड़ा था, लोकतंत्र के उस महायज्ञ में जनगण ने रूप मोड़ा था, जनजन ने रूप मोड़ा था। माननीय अध्यक्ष महोदय और इस युवा संसद में उपस्थित मेरे विद्वान साथियों, आज जब हम भारतीय लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर के प्रतिरूप में खड़े हैं, तो 1975 के आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर चर्चा करना केवल इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन है। 25 जून 1975 की वह मध्यरात्रि हमें एक अटोट सत्य से परिचित कराती है कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति या पद संविधान और संस्थाओं से बड़ा नहीं हो सकता। उन 21 महीनों में हमने देखा कि सत्ता के केंद्रीकरण से कैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार हुआ, प्रेस की कलम पर सेंसरशिप की भेड़ियां डाल दी गई और नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार यानी कि आर्टिकल 21 तक को छीन लिया गया। यह दौर हमें सिखाता है कि स्पष्ट संवैधानिक सुरक्षा कवच के बिना सत्ता का दुरुपयोग कितनी आसानी से हो सकता है। परंतु महोदय, हर अंधकार का अंत एक सवेरे से होता है। इस संवैधानिक स्ट्रेस टेस्ट ने भारत को और मजबूत किया। आपातकाल के तुरंत बाद 44वें संविधान संशोधन यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्दों की आड़ में हमारे अधिकार न छीन जा सके। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सबक हमें देश की जनता ने दिया। 1977 के ऐतिहासिक जनादेश ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत का आम नागरिक, चाहे वो खेत में काम करने वाला किसान हो या कारखाने का मजदूर, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की कीमत जानता है। उसने साबित कर दिया कि सत्ता का अंतिम रिमोट कंट्रोल जनता के हाथ में ही होता है। अंत में अध्यक्ष महोदय, भविष्य में ऐसी अलोकतांत्रिक स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए मेरा स्पष्ट सुझाव है कि हमें राजनीतिक अंध व्यक्ति को त्याग कर एक सक्रिय नागरिक यानी कि एक्टिव सिटीजन बनना होगा। हमारी न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर जब भी आंच आए तो इस देश के युवाओं को मुकर होकर आवाज उठानी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि सत्ता से सवाल पूछना कोई अपराध नहीं, बल्कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रधर्म है। जब तक देश का युवा और मतदाता अपने अधिकारों के प्रति निरंतर सतर्क रहेगा, कोई भी सरकार तानाशाह बनने की दुस्साहस नहीं कर पाएगी। इसलिए महोदय, मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी। खामोशी की चादर ओढ़े यह देश नहीं सो सकता है, खामोशी की चादर ओढ़े यह देश नहीं सो सकता है। जो भूल गया इतिहास अपना वह अपना कर खो सकता है, जो भूल गया इतिहास अपना अपना कर खो सकता है। जागरूक रहे हर नागरिक, यहाँ यह लोकतंत्र का नारा है। जागरूक रहे हर नागरिक, यहाँ यह लोकतंत्र का नारा है। यह देश किसी की जागीर नहीं, यह देश हमारा तुम्हारा है। यह देश किसी की जागीर नहीं, यह देश हमारा तुम्हारा है। यह देश हमारा तुम्हारा है। धन्यवाद। जय
we have serial number 8, Riya Jaiswal. Serial number 8, Riya Jaiswal. That's a data entry mistake. Because, yeah. Freedom is like air. We don't notice it when it is there. I say, freedom is like air. We don't notice it when it is there. But the moment we say that it is taken away, we realize how important it is. Have you ever thought what would it feel like if you're suddenly told that your voices didn't matter? One day, if you were told that do not question, do not act, do not criticize. Well, for many years, this was not just imagination, this was not just imagination, but it was reality. The Prime Minister, in our past article that challenged the people, where there were many criticisms that were faced. First of all, I would like to say that After some time. We'll call you. Next. The next participant is serial number 9, Janelle Dias. Repeat, serial number 9, Janelle Dias. Good day, respected judges, teachers, and fellow participants. As we mark 50 years since the emergency in India, it is important that we reflect not only on what happened in 1975, rather to reflect on the lessons it provides to the Indian democracy today. Imagine waking up in a democratic country where the constitution exists, the parliament exists, and the elections also exist. But your fundamental rights no longer do. This was the reality in India on the night of 25th June 1975 when Prime Minister Indira Gandhi declared the national emergency under Article 352 of the Indian Constitution on grounds of internal disturbances. The emergency lasted for around 21 months and remains one of the most debated topics in the period of history in the Indian Republic. And it is important for us to know that the political leaders were arrested, press censorship was imposed, and the fundamental rights were also suspended. But what makes this emergency historically unique is that the Indian democracy did not abandon, India did not abandon democracy completely. Rather, the democratic institutions continued to exist. And they continue to exist, but their power was drastically weakened. Their power was drastically weakened. Historians studying this period often point out that extraordinary authority was used or was exercised through constitutional mechanisms themselves. In other words, the emergency revealed a paradox. Even a democratic constitution can be used to centralize power when institutional safeguards fail. But India had other plans. In 1977, elections were held. The people of India made a historical choice. They voted out of power. This peaceful transformation of power or transfer of power shows that the system wasn't imposed from above. It was rooted within the citizens of India. And India today, 50 years later, the
again India is one of the largest democracies in the world, and precisely because of that, it has to be the strongest and most functional democracies as well. And 50 years later, this lesson still remains very clear that the emergency was not, it was a warning, a test, and ultimately a lesson. And it reminds us of one simple truth, that democracy must never be taken for granted. Thank you, Jai Hind. Next we have जब सच कहना बगावत हो और झूठ का हो दरबार लगा, जब सच कहना बगावत हो और झूठ का हो दरबार लगा, तब एक युवा ओंकार उठी और सोया हुआ जमी जगा। ये देश नहीं है सत्ता का, ये देश है अपने लोगों का। ये देश नहीं है सत्ता का, ये देश है अपने लोगों का। ये पाठ पढ़ाया था जिसने, वो दौर अब हमको याद रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय और इस संदर्भ में उपस्थित मेरे ऊर्जावान साथियों, आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने संवैधानिक पहलुओं पर बड़ी सटीक बातें रखी हैं, लेकिन आज मैं इस युवा संसद का ध्यान एक दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू की ओर खींचना चाहती हूँ, और वो है लोकतंत्र में असहमति का अधिकार और व्यक्ति पूजा का खतरा। महोदय, 1975 का आपातकाल केवल एक कानूनी विफलता नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रमाण भी था कि जब लोकतंत्र में किसी एक नेता को देश से बड़ा माना जाता है तब क्या होता है। उस दौर में यह भ्रम पैदा कर दिया गया था कि एक नेता ही राष्ट्र है, और वहीं से ही हमारे लोकतंत्र का पहला बड़ा सबक निकलता है कि एक सच्चे लोकतंत्र में हमारी निष्ठा किसी व्यक्ति या दल के प्रति नहीं, बल्कि केवल और केवल भारतीय संविधान के प्रति होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा सबसे बड़ा सबक हमें उस दौर के छात्र और युवा आंदोलनों ने दिया। आपातकाल की उस घुटन में जब बड़े बड़े नेताओं को मीसा के तहत जेल में डाला गया था, तब देश के विश्वविद्यालय से वह चिंगारी उठी जिसने तानाशाही को नींव खिला दी थी। उस दौर में हमें सिखाया कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल है। यदि आप शांतिपूर्ण विरोध की आवाज को दबाएंगे तो वह चंद्रक्रांति बनकर बाहर निकलेगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, भविष्य में ऐसा ना दोहराया जाए, इसके लिए मेरा यह स्पष्ट सुझाव है कि हमें अपने देश में संवाद की संस्कृति को जीवित रखना होगा। आज की इस युवा पीढ़ी को समझना होगा कि लोकतंत्र किसी मसीहा के भरोसे नहीं चलता है। सरकारें चाहे किसी भी विचारधारा की क्यों न हो, हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी नीतियों की तार्किक आलोचना करें। जिस दिन हमारे विश्वविद्यालय, हमारे युवा और हमारी कलम शांत हो गई, उस दिन से तानाशाही फिर से अपनी पैर पसारने लगेंगी। इसलिए महोदय, मैं अपनी बात इस देश की युवा शक्ति को समर्पित इन पंक्तियों के साथ समाप्त करूंगी। अंधेरे को चीर कर जो नया सूरज उगाते हैं, अंधेरे को चीर कर जो नया सूरज उगाते हैं, वही सच्चे सिपाही है जो सच को सच बताते हैं। न रुकना है न झुकना है, ये प्रण लेकर ही उठना है। न रुकना है न झुकना है, ये प्रण लेकर ही उठना है कि लोकतंत्र की लौ को अब हमेशा ही जलाना है, कि लोकतंत्र की लौ को अब हमेशा ही जलाना है, हमेशा ही जलाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। The next participant is serial number 11, Ambar Abhay Dalal. I repeat, serial number 11, Ambar Abhay Dalal. माननीय जजेस और यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अंबर दलाल और मैं आपातकाल के 50 साल लोकतंत्र के सबक विषय पर बोलने वाला हूँ। 1949 में संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, राजनीति में भक्ति या नायक पूजा को अगर सम्मान दिया गया तो यह लोकतंत्र के विनाश का एक बड़ा कारण बन सकता है। और यह चेतावनी तब सच साबित हुई जब 1975 में एक नेता ने
आपातकाल लगा दिया। एक रात में लोगों के सामान्य अधिकारों को छीन लिया गया, प्रेस को निलंबित किया गया, विपक्षी नेताओं को रातों रात जेलों में भेज दिया गया। यह वह काला दौर था जब संविधान तो जीवित था, लेकिन उसकी आत्मा की हर रोज परीक्षा हो रही थी। लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं होता, चुनाव जरूरी है, लेकिन चुनाव से जीतकर आई हुई पार्टियां और नेता खुद को जब लोकतंत्र से और संविधान से ऊपर समझने लगे, तब हमारी स्वतंत्र संस्थाएं उनको रोकने के काबिल होनी चाहिए। लोकतंत्र केवल संविधान ही नहीं, उसकी संस्थाएं जागरूक नागरिक पर भी निर्भर करता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह भी कहा था, संविधान जितना अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको अमल में लाने में लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान नहीं होगा। आज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो समझना चाहिए कि एक विकसित राष्ट्र की पहचान न केवल उसकी आर्थिक शक्ति है, बल्कि नागरिकों को दिया हुआ सम्मान, अधिकार और संवैधानिक मूल्य होना, जैसे न्याय, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, यह भी उतना ही जरूरी है। लोकतंत्र 1975 में आपातकाल में प्रेस को सेंसर किया गया, लोगों को मौलिक अधिकार छीन लिए गए। यह बताता है कि कोई भी नेता कोई भी संविधान से बड़ा नहीं होना चाहिए। किसी भी समाज में और खास करके लोकतंत्र में सबसे जरूरी अगर कुछ है तो वह कानून का शासन, जो कि सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। जब भी लोगों के कानून संविधान मौलिक अधिकार छीन लिए जाए, न्यायपालिका स्वतंत्र हो और सभी संस्थाएं अपना काम करके लोकतंत्र को वापस जुटाने में सक्षम होनी चाहिए। आपातकाल में हमें यह भी 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ तब वापस चुनाव आ गए और उसमें यह साबित हुआ, लोगों ने साबित किया कि लोकतंत्र केवल लोगों के वोट से चलेगा। उन्होंने उस सरकार को हटाकर एक नई सरकार स्थापित की और लोकतंत्र को नई स्टेशन स्थापित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Next, we have participant 12, Shruti Uday Desai. Repeat, Shruti Uday Desai. यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। कल्पना कीजिए, अगर एक दिन अचानक आपकी बोलने की आजादी छीन ली जाए, अखबारों में सच ना लिख सके और कई नेताओं को बिना कारण जेल में डाल दिया जाए, तो क्या होगा? ऐसा ही एक दौर भारत ने साल 1975 में देखा था। 25 जून 1975 भारत उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में द इमरजेंसी इन इंडिया लागू किया। यह समय भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक था। लगभग 21 महीनों तक देश में मौलिक अधिकार सीमित कर दिए गए, अखबारों और मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई, कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता की आवाज सुनी जाए, लेकिन उस समय जनता की आवाज को दबा दिया गया। लेकिन इतिहास की हर एक घटना से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है। पहली सीख, संविधान और अधिकार की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें स्वतंत्रता और अधिकार देता है, इसीलिए इसकी रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। दूसरी सीख, लोकतंत्र में मजबूत संस्थाएं रहना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष मीडिया और मजबूत विपक्ष, ये सभी लोकतंत्र को संतुलित और मजबूत बनाते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी सीख, जनता की शक्ति। साल 1977 इंडियन जनरल इलेक्शन में भारत ने यह साबित कर दिखाया कि वोट की ताकत से यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता के पास ही होती है। आज के युवा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करें, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझें और हमेशा सत्य, स्वतंत्रता और न्याय के लिए खड़े रहें।
क्योंकि लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारा विश्वास है और हमारे भविष्य की नींव है। अगर हम जागरूक रहेंगे तो हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत और सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। Next we have number 13, Bhargav Raj Rane. Number 13, Bhargav Raj Rane. हेलो, नमस्कार सभी को। आज से लगभग 50 साल पहले भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर आया जिसे हम इमरजेंसी के नाम से याद रखते हैं। 25 जून 1975 की वो रात जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी की सरकार ने और उस समय के प्रेसिडेंट श्री अलाउद्दीन अहमद की सलाह दी और देश में इमरजेंसी लागू कर दिया गया। उस रात बस एक मामूली सा फैसला नहीं हुआ था, उस रात भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई थी। एक ही पल में लोगों के मूल अधिकार से छीन लिए गए। अखबार छपने से पहले उन पर सरकारी नियंत्रण था और विपक्ष के कई नेता जैसे या मोरारी देसाई हो, इनको जेल में बंदी बना दिया था। आवाजों को चुप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, आवाजों को दबाया जा सकता है पर हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। उस वक्त देश में एक आंदोलन भी चल रहा था जिसका नेतृत्व कर रहे थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। उन्होंने लोगों को सिर्फ एक बात बताई, इस देश की असली ताकत सिर्फ किसी कुर्सी में नहीं है, इस देश की असली ताकत भारत की जनता में है। फिर आया 1977 का चुनाव। कई लोगों को लगने लगा कि अब लोकतंत्र वापस ना आ पाए, लेकिन भारत के लोगों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, सरकार बदली और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। ये पल सिर्फ सरकार बदलने का नहीं था, ये पल था भारत के लोकतंत्र की मजबूती का सबूत। आज इमरजेंसी को 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये सीख है। पहली सीख, लोकतंत्र को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरी सीख, न्यायपालिका और मीडिया लोकतंत्र की नींव की हड्डी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस देश की असली ताकत न कि सरकार में है, न कि देश में, इस देश की असली ताकत भारत की जनता में है। और जब तक भारत की जनता अपने संविधान और अपनी आजादी के लिए लड़ेगी, तब तक इस लोकतंत्र सिर्फ नहीं रहेगा बल्कि और भी मजबूत रहेगा। धन्यवाद। Next, we have participants number 14, Sami Naik. I repeat, participant serial number 14, Sami Naik. Hello everyone, I am Sami Naik. Today I am going to present my view on the topic 50 years of emergency. Lessons for Indian democracy. Imagine a moment where constitution exists, but the freedom it promises suddenly disappears. Have you ever wondered what it would feel if the voices of citizens are silenced overnight? This exactly happened in India in 1975 during the emergency in India led by Indira Gandhi. The emergency in India remains one of the most controversial and debated moments of Indian democratic history. During this period, the freedom to speak, question, and criticize the government was restricted. Newspapers were
Many political leaders and activists were arrested. But the story of emergency was not only about fear and restrictions, it was also about awakening. For many Indians, it was the time when they realized something important, that the democracy is not automatic. It survives only when people remain aware and active. It reminded the nation that democracy not only about elections and leaders, democracy truly lives when people question authority, express their views, and participate freely in public debates. The first lesson that democracy cannot survive on silence. A healthy democracy requires voices that question, debate, and challenge the authority. The second lesson is that power must always have limits. When the authority becomes too concentrated, the balance that the democracy requires begin to weaken. Another lesson is that awareness among citizens. Rights are written in Constitution, gain real value only when people understand them and stand by them. And perhaps the most important lesson is that democracy ultimately belongs to people. Government may hold power temporarily, but the true guardians of democracy are citizens who remain alert, courageous, and engaged. With this thought, I would like to conclude my speech. Thank you. Serial number 15 is absent. So serial number 16. Next up we have serial number 16, Yogan JS Kosambe. I repeat, serial number 16, Yogan JS Kosambe. I repeat, 15 is absent. So next up we have serial number 16. Respected judges, teachers, and my dear friends, good afternoon to everyone present here. 50 years ago, on 25th June 1975, India experienced one of the most controversial and challenging periods in its democratic history. The emergency was declared by then Prime Minister Indira Gandhi. The period lasted until 1977. During this period, many fundamental rights of citizens were suspended. During the emergency, political opponents were arrested, press freedom was restricted, and strict government control was imposed across the country. Leaders such as Jayaprakash Narayan and many others who protested against the government were imprisoned. Newspapers faced censorship, and citizens had limited freedom to express their views. The period is remembered as the time when democratic institutions were severely tested. However, the emergency also taught India some important lessons about democracy. First, it reminded us that democracy is not just about elections, but also protecting the fundamental rights and freedoms of citizens. Freedom of speech, freedom of press, and the right to protest are essentials for a healthy democracy. Second, it showed the importance of strong institutions such as the judiciary, the media, and the active civil society. These institutions act as checks and balances to prevent misuse of power. Third, the emergency demonstrated the power of the people. In 1977 general elections, the citizens of India voted decisively and brought change through democratic means. This proved that the ultimate power in a democracy lies within people. 50 years later, remembering the emergency is not about blaming the past. It is about learning from the history, so that such situations never arise again. It reminds every citizen and leader that democracy must be protected with responsibility, awareness, and participation. In conclusion, the emergency was a difficult chapter in India's history, but it also strengthens and the understanding that democracy must always be safeguarded. Let us remember the past, learn from it, and work together to build a strong and more vibrant Indian democracy. Thank you.
Next up, we have serial number 17, Vastav Revodkar. And repeat. Next up, we have serial number 17, Vastav Revodkar. India, a vivid country, filled with colors of diversity, once contributing 25 to 30% of global wealth, also termed as the Sone ki Chidiya. This strong, well-led democracy faced a very challenging time in the year 1975, a national emergency. Fundamental rights of people were taken away with the blink of an eye. Rights like freedom to speech or freedom to protest were just distant. Censorship was imposed on media, and censorship was imposed to such an extent where the journalists were arrested. The leaders of the opposition were jailed. They were jailed for showing the people what is right, what is wrong. The democracy was once stable, which was once told to be the best, was collapsing, as told by Ivan Jenner, a British scholar. As a youth, we have our own perspectives. Some say the glass is half full, while others say the glass is half empty. I feel, as a youth, we need to have a holistic view on this topic. We must know our voice, how much power our voice holds. As the citizens, we must know our rights. At the end, we must count our blessings as well. I mean, the media houses should not be under control of political leaders. And our blessings, of course. In the current democracy, we have something called as the RTI, where we can question every decision taken by the government at any point of time. We have things like EVMs, where we can elect our leaders in a very fair and square manner. And at the end, it is me, you, and the citizens of this country, the youth, who are the most powerful pillars of the society. If we want, we can do anything we want to. I mean, Aryabhatta invented the zero. As engineers know, it's a revolution in the world of mathematics. If one person can change the whole world, why can't we, the youth of this nation, come together and bring about a change that this nation deserves? I feel at this point we need to come together. The voices of youth must align. Align to such an extent that we make this country great as it was, as it is, and as it always will be. And to get this Sone ki Chidiya back, which has flown away, back to its nest. Once again, thank you, ladies and gentlemen, and have a very nice day. Next up, we have serial number 18, Priya Valis. I repeat, serial number 18, Priya Valis. Remembering the emergency, safeguarding our freedom for our future generation. As a youth of India, we are remembering one of the most important parts of our history, and that is, during this period, many freedoms of people were restricted. The right to speak freely was limited. The democracy principles were affected. This period also reminds us of one important truth, that democracy is precious and we need to protect it. And democracy doesn't mean just voting during elections, but it also means the freedom to speak, question, and live without fear. Freedom is not just to speak, but also to be heard without fear. Today, without fear. Just imagine, there was a period when all this freedom were taken away from us, and it was during past 50 years. During this period, there were many laws which were going against the constitution, during which the opposition leaders were arrested overnight. Newspapers and media were censored. Besides which, even the ordinary citizens were afraid
afraid to raise their voices. This was the period during the emergency in India. This emergency teaches us three important lessons. First, that freedom can never be taken for granted. Secondly, we require a strong institution like the judiciary and free press are very essential. Thirdly, the youth of India should remain aware and responsible. We, the youth of India, who will be shaping the nation, our role is not just remembering the history, but learning from it. Safeguarding our democracy means respecting diverse opinions and ensuring that all democratic rules remain strong. Today, we the youth of India are just not the future of the nation. We are the protectors of our democracy. Today, if India wants to move towards a well-developed nation through the vision of Viksit Bharat 2047, it should be built on the foundation of freedom, justice, and responsible citizenship. Let us pledge that through this emergency, we build a stronger, more transparent, and a more inclusive democracy. Because when we remember our past, we protect our future. And when we protect our freedom, we protect the soul of our nation. Thank you. Judges, please note, serial number 19, Mukta Deshpande is absent. So we will move on to serial number 20. If it is marked absent in your files, please note that serial number 20, Ved Kamali is present. So next up we have presenting serial number 20, Ved Kamali. Good morning, respected judges and my dear friends. Today I stand before you to speak about the 50 years of emergency in India, a period that remains one of the most serious tests of our democracy. In June 1975, the emergency was declared across the country. For the next 21 months, many of the basic freedoms that citizens enjoy in a democracy were restricted. Newspapers faced censorships, political opposition was suppressed, and thousands of people were detained. The voices that normally questions power, but the story of emergency is not just about restrictions, it is also about the strength and resilience of the Indian democracy. The first lesson we learn is that democracy is fragile if citizens remain silent. A democratic system survives only when people stay aware, ask questions, and defend their rights. Freedom of speech, freedom of the press, and the right to dissent are not just privileges, they are the pillars that hold a democracy strong. The second lesson is about the importance of strong institutions. Institutions like the judiciary, the media, and civil society play a vital role in maintaining balance in the governance. The third lesson is the power of the people's vote. When elections were finally held in 1977, the citizens of India demonstrated that the ultimate power in a democracy lies with them. Though peaceful voting, they showed that governments come and go, but the will of the people remains supreme. Another lesson is the need for constant vigilance. Democracy does not protect itself automatically. Each generation must understand its value and be ready to defend it. Rights that are taken for granted today were protected by the courage and sacrifices of many individuals in the past. As young citizens, it is our responsibility to remember this chapter of history, not to divide people, but to learn from it. History teaches us that transparency, accountability, and respect for constitutional values are essential for a healthy democracy. 50 years later, the message of that time is clear. Democracy is the strongest when citizens are informed, the institutions are independent, and power is held accountable. Let us promise that we will always value our freedom, respect our constitution, and protect the democratic spirit of our nation. Because in the end, the greatest strength of India is not just its size or population, but its unwavering belief in democracy and the power of its people.
Next up, we have serial number 21, Alan Polly. Judges, please note, serial number 21, Alan Polly. Honorable judges and my respected young citizens. Exactly 50 years ago, on the night of 25th June 1975, India entered one of the most darkest phases of its democratic journey, that is the emergency, where the voice of the citizens was silenced, fundamental rights were suspended, opposition leaders were imprisoned, and the freedom of the speech was restricted. And the uncomfortable truth is, even today, the situation has not changed. It remains the same. You ask questions, you are labeled anti-national. You criticize, you face pressure. We must ask ourselves an honest question. Have we truly learned from the lessons of the emergency, or are we slowly repeating the same mistakes? Point to be noted, democracy does not collapse overnight. It weakens slowly when citizens stop questioning and power stops listening. If there is a pillar that has to be changed, that is the judiciary. In India today, there is around 5.3 crore pending cases. That is more than the population of South Korea. And if you take, the researchers say that it might take centuries to work on these pending cases. There are around 20 judges per million in India, whereas in US it is around 150 judges per million people. And despite having judges less, there are 32% of High Court judge positions remain vacant. So the thing is that the justice delay is not justice denied. Justice delay is democracy denied. When a case takes years, it's not just delay, it is someone's whole life on pause. The common person keeps waiting, and sometimes the contrast becomes painful. Heard about Sonam Wangchuk, who was jailed for protesting peacefully for the people's right. 14-year-old child Aswamit, a case was filed against him for asking questions. A woman speaker, she got rape threats for speaking against the system. Note, they fear your questions, they fear your awareness of your rights. Because the moment you understand the constitution, the control starts breaking. A democracy doesn't grow by silencing the voice. When we speak, when a woman can walk freely at night, when she can take a taxi and there is no need for to call the parents and say, this is my taxi, this is the number, then we can say we are democratic. There is no meaning other than that than celebrating the Women's Day. There are progress. The leaders are building things. Infrastructure is growing. But only the rich people are benefiting. Are the poor people benefiting from it? You go to an hospital, they have to pay around 50 to 1 lakh cases. You take the room, you have to pay 5-star hotel bills. Then comes the additional charges the moment you get a room. So my conclusion is that you have to ask questions. When you ask questions like me, there will be a change, and that is called democracy. Thank you. Next up, we have participant 22 who is marked absent in the judges' files. Please note he is present. Participant 22, Shubhan Desai. I repeat, participant 22, Shubhan Desai. Good morning, respected faculty of Bosco College of Engineering and all my dear friends. For today's topic about 50 years of emergency, lessons for democracy, I will be talking about how our India, the world's largest democracy which has been built on the principles of freedom, justice and equality, faced a moment of serious challenge on June 25, 1975 under the leadership of Indira Gandhi. A national emergency was declared and leaders were arrested and censorship was placed on media. This went on for 21 months and many democratic freedoms we enjoyed were put on hold. Today,
after 50 years, this emergency is remembered as a moment of darkness, and many lessons could be learned from it. First lesson is that democracy must always protect freedom. Our freedom of speech, freedom to protest, and freedom of expression is very important to us and can never be taken for granted, because that's what living in a democratic country means. Second lesson is the importance of strong judiciary. Strong, because when the judiciary is firm, then and only then will the people of this country feel safe, as the ones on top will never be able to misuse the power they have been entrusted with. And lastly, what matters is the strength of the people. The strength of the people is what helped restore democratic values in 1975, hence proving that the real power does not lie with the leaders at the top, but with the people. A truly evolved nation is one where democracy is respected, voices are taken seriously, and the citizens know their rights. Let us take lessons from the mistakes of the past and move forward to create a better future for this country. Thank you. Next we have serial number 23, Shivali Sawant. Number 23, Shivali Sawant. India, the world's largest democracy, is a land of many diverse voices. Voices of different cultures, beliefs, ideas, and languages. Yet, history has shown us that even the largest democracies can have moments when those voices are silenced. My name is Shivali Sawant, and I'm here to share my views regarding 50 years of emergency, lessons for democracy. On the night of 25 June 1975, India entered one of the darkest debatable chapters of independent history. The then President on the advice of then Prime Minister Indira Gandhi declared a national emergency under the Article 352 of the Constitution. This emergency granted extraordinary powers to the government, which included large-scale curfews, arrests of thousands of students, political figures, activists, and journalists. It led to rampant implementation of policies like the controversial population control measures and urban demolitions. Some newspapers even left empty spaces where articles were supposed to be, showing the void that was caused by these restrictions. Voices raised were regarded as a rebellion rather than a disagreement. But amidst all of these impositions, leaders such as Jayaprakash Narayan, Atal Bihari Vajpayee, and others demanded democratic reforms. This acted like a ray of hope in times of suppression, making the period marked with political tensions and debate. 21 months later, in 1977, elections were successfully held. This time, the citizens of India responded with the most important instrument that democracy possesses, the ballot. Post-elections, the government was overthrown, political prisoners released, and democratic processes were restored. This moment revealed something profound. It revealed that democracy is not defined by the government. It belongs to the people that raise their voices. It belongs to the media to speak the truth. It is the responsibility of leaders to remember that power belongs to the people. The obvious lesson we learned was that with grit and resilience, citizens can reclaim their rights and restore democracy. The deeper lesson was vigilance. It is the responsibility of citizens to question the laws that are passed, to examine how power is exercised, and to remain aware about how authority might be misused in the future. Finally, the ballot serves as a reminder that in a democracy, power ultimately lies not with those who govern, but those who choose them. Thank you. Next up, we have serial number 24, Santosh Shivapur. Judges, please note
Next up, we have participant number 24, Santosh Shivapur. प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भारत की युवा पीढ़ी एक अमृत युवा पीढ़ी है और अमृत युवा पीढ़ी के रूप में मैं आज संतोष बिरप्पा शिवापुर आज यह विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों और मेरे सभी साथियों का मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं इसी विषय पर ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करने आया हूँ जो आपातकाल और लोकतंत्र पर उपस्थित है। महोदय, ये शब्द भी सुनता हूँ तब मेरे अंदर 70 दशक का जो दृश्य हुआ था जहाँ ना जाने कितने लोगों को बेघर किया गया था, वहीं पर हमारे जो पत्रकार और हमारे मीडिया उनको पर नियंत्रण लगाकर हमारे जो महानतम जो लोकतंत्र है उस पर मुंह पर पट्टी बांधी गई थी। महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ, एक तरफ न्याय पर संतुलन रोक पर रखी थी और दूसरी तरफ तानाशाही का जो भी आवाज उठा था उसके ऊपर सलाखों पीछे धकेल दिया गया था। महोदय, काले यह 50 वर्ष जो काले अध्याय माना जाता है वह वर्तमान में तोड़ कर देखता हूँ तो यह प्रश्न उठता है कि हमारा जो लोकतंत्र है इस आपातकाल से क्या ही सीखा। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस आपातकाल काले अध्याय से जिससे चुनौती थी वह राज्य सियासत जो प्रतिनिधि थे उनको सड़क का रास्ता दिखाया गया था। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी आपातकाल इस देश में हुआ है तभी 1975 से लेकर 2019 तक जब भी 3 तरह के ऊपर समाप्ति तक एक का जवाब हिसाब से लिया गया है। मैं यह भी बताना चाह रहा हूँ महोदय आपको, जहाँ इस देश में महिलाओं और मातृशक्ति को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है, वहीं पर एक ऐसा दौर आता है जहाँ एक अपने राष्ट्र के प्रति चिंता करके अपने स्वतः को चिंता करके तानाशाही का भाग ले जाता है। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि जहाँ रामलीला मैदान में गूंज उठी उस बीच लोकतंत्र की मशाल लेकर विजय सिंधिया जैसी महिला भी एक भारतीय की बेटी थी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो आपातकाल का काला अध्याय था उस दौरान ऐसे कई सारे हमारे भारत कई सालों पीछे छूट गया था किसी कारण, इस तानाशाही के कारण। बल्कि हमारा जो देश है यह हमेशा जो अपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामने आया है और ये वो देश कहला जाता था पहले सोने की चिड़िया होती थी। ये वो भी देश है जहाँ पर अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, पवार साहब ने कहा था कि लहू में लथपथ होकर जंग के पथ पर डोल रहा हूँ, शायद मेरा खून जगेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैं भारत का संविधान हूँ। लाल किले से मैं बोल रहा हूँ, मैं लाल किले से बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। Next up we have serial number 25, Parth. Number 25, Parth. भारत इस शब्द का अर्थ है ज्ञान। यह वह भूमि है जो सबको ज्ञान का प्रकाश प्रदान करती है। नमस्कार माननीय मेरे साथियों, मेरा नाम पार्थ गावड़े है। मैं शासकीय कला विद्या एवं वाणिज्य महाविद्यालय कैफे का छात्र हूँ। कृषि प्रधान भारत देश की इस माटी के कण कण में सदियों पुराना इतिहास छुपा है। इस पवित्र सनातन भूमि पर अनेक शासकों ने अपना शासन किया है। कई साम्राज्यों का यहाँ पर उदय हुआ तो कई साम्राज्यों का यहाँ अस्त भी हुआ है और इसका साक्षी है हमारे हिमालय। परंतु साथियों, आज इस घटना को याद करना आवश्यक है जो 50 साल पूर्व घटित हुई थी। वह काली रात है 25 जून 1975 की, जिसने भारत के संविधान की नींव को हिलाकर रख दिया था।
उस दिन को संविधान हत्या दिवस कहा जाता है, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 के तहत आंतरिक शांति का हवाला देते हुए देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आज के युवाओं का यह जानना आवश्यक है कि किस प्रकार लोकतंत्र व्यवस्था की हत्या की गई थी। उस वक्त नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर गए थे, अखबारों पर सख्त सेंसरशिप लागू किया गया था, मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया था। क्योंकि नागरिकों को खबर न मिल सके। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी जैसे नेताओं को बिना किसी अपराध के जेल में डाला गया था। न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। इस बात को हमें जान लेना चाहिए कि लोकतंत्र तभी सुरक्षित है जब तक न्यायपालिका, चुनाव आयोग और प्रेस स्वतंत्र रूप से कार्य करे। सत्ता और अधिकारों का एक व्यक्ति या एक जगह पर केंद्रित रहना लोकतंत्र के लिए घातक है। उपस्थित साथियों, लोकतंत्र के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ विधायिका, जो कानून बनाते हैं। दूसरा स्तंभ कार्यपालिका, जो कानून लागू करते हैं। तीसरा स्तंभ न्यायपालिका, जो कानून सुनिश्चित करता है। और अंतिम स्तंभ मीडिया और प्रेस, जो नागरिकों तक कानून और घटनाओं की खबरें पहुंचाते हैं। इन चारों स्तंभों की नींव हम आज के युवा हैं, जो आने वाले भारत का सुनहरा भविष्य है। लोकतंत्र की इस व्यवस्था को कायम रखने की जिम्मेदारी हम युवाओं के कंधों पर है, ताकि देश में सुख, शांति और न्याय की लौ चलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। Judges, please note, next up we have serial number 3, Dev Kalgudkar. I repeat, next up we have serial number 3, Dev Kalgudkar. Good afternoon everyone present here. I am Dev Kalgudkar from Bosco College of Engineering. 50 years ago, the world's largest democracy went silent from June 1975 to 1977. India was placed under national emergency, not because of war, not because of invasion, but because of criticism. Fundamental rights were suspended, press was censored even before newspaper could be printed, and in the country, speaking was dangerous. Article 352 of the Constitution gave the government immense power, and with power means weak accountability, democracy trembles. Slogan was discipline, trains ran on time, officers work efficiently, but let us ask, what's efficiency without freedom? It is fear. Emergency was not a political mistake, it was a moral warning, because democracy does not die in a loud moment. It fades when citizens stop asking questions. It weakens when institutions stop resisting. And it collapses when fear overcomes freedom. But here is a hope. In 1977, when re-elections were held, people responded not with violence. People responded not with response, but they responded with vote. And that single act proved something powerful. You can silence voices temporarily, but you cannot silence the will of people forever, as Dr. B.R. Ambedkar had warned. However good a constitution may be, it will turn out to be bad if it happens. Turn out to be bad if those who are going to work on it happen to be a bad law. The emergency taught us unforgettable lessons. First, rights are not permanent, they must be protected. Second, free press is not optional, it is essential. Third, no leader stands above the constitution. And most importantly, democracy is not self-sustaining. It survives because ordinary citizens chose courage over comfort. Today, threats to democracy may not come in dramatic announcements, they may come quietly.
through normal censorship and simple public apathy. And that's why remembrance matters, because democracy is not a grief we inherit. It is a responsibility we renew every single day. This finger, this voice, this vote, that is our power. And as long as citizens remain aware, engaged and fearless, no energy can ever empower the spirit of India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Judges, please note that was participant number 3. Next up, we have participant number 27, Firdaus Syed. I repeat, next up, we have participant number 27, Firdaus Syed. Good afternoon, respected judges and everyone present here. B.R. Ambedkar once said, however good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. This quote reminds us of the importance of the Constitution of India, the backbone of our Indian democracy. Our constitution guarantees every citizen the fundamental rights, such as the right to freedom, equality, and protection of life and liberty. One of the most powerful rights is the freedom of speech and expression that allows every citizen to speak freely, express their opinions, and even criticize the government. Along with these rights, our constitution also gives us the fundamental duties that reminding the citizens to respect the nation, follow the law, and protect the democratic values. However, 50 years ago, India witnessed a period when these rights were severely restricted. This period is known as the emergency in India. On 25th June 1975, the then Prime Minister Indira Gandhi declared emergency under Article 364 of the Constitution of India, citing internal disturbances. During that time, the democratic freedom was limited. Press was censored and the opposition leaders were arrested. The citizens could not protest openly or even criticize the government. Newspapers had to seek government permissions before publishing the news. Political leaders and activists were arrested. The fundamental rights that protected the citizens were temporarily suspended. But why did this happen? One of the major reasons was political crisis. In 1975, Indira Gandhi versus Raj Naren verdict found Indira Gandhi guilty of electoral malpractices and cancelled her elections. At the same time, mass protest was being led by the Jayaprakash Narayan, demanding her resignation. Facing growing political pressure and unrest, the government declared emergency to maintain control and stability. This emergency proved the strength of our Indian democracy. In 1977, elections were held. People voted for change. And just imagine if such a situation happens today in India's digital and connected world, it would be very difficult for this. And any attempt to restrict democracy would have to face strong resilience from the citizens, media, and the judiciary. As Jayaprakash Narayan wisely said, the price of the freedom is an eternal vigilance. This emergency teaches us that democracy should never be taken for granted. It is the responsibility of both leaders and the citizens to protect freedom, equality, and justice. Let's learn from the history and ensure that the voice of the democracy always remains strong and fearless. Thank you. Next we have participant number 28, Sweetu Kumar. I repeat. Yes, that's correct. Participant number 28, Sweetu Kumar.
तो यहाँ पे मौजूद सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। तो आज मैं आया हूँ आपको हमारे महाभारत देश में घटी हुई घटना के बारे में बताने के लिए। एक ऐसा समय काल जहाँ हमारा भारत देश आजाद तो हो गया था, फिर भी गुलामी में जी रहा था। हमारा भारत देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, गुलामी में जी रहा था अपनी ही सरकार के। वह सरकार जो अपनी जनता को मुंह तो देती है पर अपने शब्दों को चुनने का अधिकार छीन लेती है। वह सरकार जो पत्रकारों के हाथों में कलम तो जमाती है पर उनसे अपनी विचारधारा को उन कलमों के साथ पेश करने को हक नहीं देती है। उस समय काल था 25 जून 1945 से लेकर 21 मार्च 1977 का। वो 21 महीनों का समय काल जिसको हम आज आपातकाल के रूप में जानते हैं। और उसका अंत क्यों हुआ? उसका अंत तब हुआ जब उस समाज ने यह समझा कि सरकारें बनी जाती है समाज के पालन पोषण के लिए, ना कि उसके शोषण के लिए। और आज जब उस समय को 50 साल बीत गए हैं और आज मैं जब पीछे मुड़ के उस काल को देखता हूँ तो मुझे उसमें और आज में ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे पास बोलने का अधिकार है पर ऐसा कोई नहीं जो हमारी बातों को सुने। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज हमारे पत्रकारों के पास ये अधिकार तो है कि अपनी विचारधारा को कलमों में लाके प्रदर्शित कर सके, पर ऐसा कोई नहीं जो उस विचारधारा को अपनी कर्मधारा बना के उसको अपनी जिंदगी में अमल कर सके। हाँ, मैं मानता हूँ हमें साथ रहने का अधिकार है, पर ऐसा कोई नहीं जो साथ रहे लोगों को एकत्रित करके आगे बढ़ सके। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ छोटे से छोटे मुद्दों को दो सरकारें आपस में लड़ बैठती हैं और वहीं दूसरी ओर बड़े से बड़े किस्सों के ऊपर हाथ से बना के उस पर हंस जाती है। अब तो मेरी उम्मीद बस आने वाले कल से है, वो आने वाला कल जिसका सपना हम सब ने देखा है और उस सपने का नाम हमने विकसित भारत दिया है। तो मेरी बातों को गांठ बांध के रखो आप सब कि वो सपना केवल सपना ही रह जाएगा जब तक मेरे और आप जैसे युवा आगे नहीं आएंगे। वो सपना केवल सपना ही रह जाएगा जब तक मेरे और आप जैसे युवा आगे नहीं आएंगे। वो भारत कभी विकसित नहीं बन पाएगा जब तक युवा अपना ताकत नहीं समझ पाओगे। और मैं अपना अंत ये करके कहना चाहूंगा कि जब 2047 ऐसा समय काल बन जाएगा, विकसित भारत बनेगा जिसे देख के आप और मैं गर्व से बोल पाएंगे कि हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। Next participant is number 29, Shama Khatwal. Number 29, Shama Khatwal. Dr. B.R. Ambedkar once said, however good the constitution may be, if the people who are implementing it are not good, it will prove to be bad. Good afternoon, respected judges and everyone present here. I am Shama Khatwal and today I am here to share my views on 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. These words by Dr. B.R. Ambedkar remind us that democracy is not something that survives on the laws written in the constitution, but it survives on the responsibility and integrity of the people who uphold it. 50 years ago, India faced one of its most challenging period in its democratic history, the emergency of 1975. During those 21 months, the fundamental rights were suspended, the political opponents were jailed, press was censored, and the normal functioning of the democratic institution was disrupted. For a country that had proudly adopted constitution in 1950 with the promise of equality, liberty and justice, a movement like this raised an important question. How fragile can democracy be? But history is not only to remind us our mistakes, it is to teach us lessons. The first lesson from the emergency is that democracy does not survive on institutions alone. It survives on the vigilance of its citizens. The second lesson is about the importance of independent institutions.
nations. The judiciary, the press, and other democratic institutions safeguard us against the concentration of power. When these democratic bodies are weakened, democracy itself becomes vulnerable. The third lesson is about the freedom of expression. During the emergency, censorship limited the ability of citizens and journalists to question authorities. A healthy democracy is the one that allows debate and criticism, because disagreement does not mean a threat to democracy. It means that the democracy is alive. Today, 50 years later, the question is not only about remembering the emergency. It is about understanding our responsibilities moving forward. As a young citizen, we must realize that democracy is not something we inherit permanently. Instead, it is something that we need to actively protect by staying informed, by respecting diverse voices, and by engaging responsibly in discussions and decisions that shape the future of our society. Thank you. Next up, we have participant number 30, Braj Mohan. Judges, please note, next up, we have participant number 30, Braj Mohan. कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को कभी बदनाम नहीं होने देंगे, और जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत के लोकतंत्र को कभी नीलाम नहीं होने देंगे। सम्मानीय सदन, निष्पक्ष और दूरदर्शी निर्णायक मंडल की इस पवित्र व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए सदन पटल पर प्रस्तावित विषय आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए। आदरणीय सभापति जी, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहिंसा से प्राप्त भारत का लोकतंत्र, शहीद आजम भगत सिंह की भुजाओं में आजादी की जवानी का प्रतीक लोकतंत्र, और देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से प्रभावित। जब परिवारवाद और वंशवाद से प्राप्त सत्ता और सिंहासन और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए 25 जून 1975 को देश में आपातकाल का फरमान जारी करके भारत के लोकतंत्र की हत्या कर देश को आपातकाल की आग में झोंक दिया गया, और दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान भारत के लोकतंत्र और संविधान के साथ चीरहरण करने की कोशिश की गई। तब देश के नौजवानों ने भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए संपूर्ण क्रांति के जननायक श्री जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में और 24 साल के युवा नरेंद्र मोदी जी की शब्दों की आग का अनुभव लेकर जब आपातकाल का विरोध किया, तो हजारों लोगों को जेलों में यातनाएं दी गई, परिवार नियोजन के नाम पर जबरन नसबंदियां कराई गई, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया। और महोदय, सबसे बड़े दुख का पहाड़ टूटा उस 24 साल के नौजवान के ऊपर जो अपनी मां के अंतिम संस्कार में मुखाग्नि देने के लिए भी सम्मिलित नहीं हो सका, क्योंकि महोदय वो हम और आपके लिए भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, और वो 24 साल का युवा नेता कोई और नहीं बल्कि इस देश के वर्तमान रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी थे। आज आपातकाल के 50 वर्षों से सबक लेकर देश के 140 करोड़ जनमानस न केवल एक मतदाता के रूप में बल्कि एक विचारक, एक नेतृत्वकर्ता और परिवर्तन के संघनाथ के वाहक के रूप में लोकतंत्र को दिशा दे रहे हैं। आपातकाल के 50 वर्षों से सबक लेकर भारत के लोकतंत्र की आत्मा जाग चुकी है। जनता ने महसूस किया कि वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद, भाईचारावाद और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार कर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र प्रगति को समर्पित भारत माता के प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सुशासन, अनुशासन और जनता के स्वराज को विस्थापित करके भारत का लोकतंत्र अधिक आत्मनिर्भर और सुरक्षित हुआ है। आज सभी धर्मों, जाति, वर्गों के लोग सामाजिक समरसता के साथ रहकर भारत के लोकतंत्र को अमर बनाते हैं। कृषि, औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में हमने विशाल उपलब्धियां हासिल करते हुए चंद्रयान से लेकर चंद्रमा तक और मंगलयान से लेकर मंगल तक की यात्रा की। जहां हड़प्पा
Judges, please note. Next up, we have serial number 31, Neeraj Kumar. I repeat, next up, we have serial number 31, Neeraj Kumar. है अंधेरा बहुत, अब तो सत्य रूपी सूरज निकलना चाहिए। अरे जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जिन्होंने भारत में आपातकाल लगाकर देश के संविधान और लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश की थी, उन्हें भारत की सत्ता की राजनीति से बाहर निकलना चाहिए। देश के 140 करोड़ लोगों से माफी मांगनी चाहिए, जिससे भारत के लोकतंत्र की आत्मा अजर रहे, अमर रहे, अटल रहे, शाश्वत रहे और अक्षुण्ण रहे। शंखनाद की ध्वनि करते हुए मैं नीरज गोवा का प्रतिनिधित्व करते हुए सम्मानीय मंच और सम्मानीय निर्णायक को दंडवत प्रणाम करता हूँ। सदन में बैठे छोर से लेकर और छोड़ तक आप सभी को सादर नमन करता हूँ। सभापति महोदय, और यह कहने का साहस रखता हूँ कि जब वंशवाद और परिवारवाद से प्राप्त सत्ता, सिंहासन और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सत्य, अहिंसा और शांति प्रिय राष्ट्र में अशांति के आधार पर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और सन 1973 में भारत को आपातकाल की आग में झोंक दिया गया। सभापति महोदय, तब भारत माता के वीर सपूतों ने यह प्रण किया कि हम आजादी कभी सामने नहीं होने देंगे। उन्होंने प्रण किया संपूर्ण क्रांति के जननायक श्री जयप्रकाश नारायण जी की वाणी से प्रेरित होकर और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के तेज से प्रभावित होकर जब हजारों लाखों की तादाद लोकतंत्र के प्रहरी में देश में स्वघोषित आपातकाल का विरोध किया, तब लाखों लोगों को जेल में यातनाएं दी गई, जबरन नसबंदियां कराई गई, जिसे सुनकर आज भी लोकतंत्र की रूह कांप उठती है। सभापति महोदय, देश की संसद में आपातकाल से सबक लेने के बाद आजाद भारत के सबसे कुख्यात कानून मीसा को समाप्त किया और संविधान में पहले आंतरिक अशांति को और स्पष्ट और व्यापक शब्द से सशस्त्र विद्रोह से तब्दील किया। सभापति महोदय, आपातकाल से सबक लेने के बाद भारत की राष्ट्रवादी चेतना और प्रखर हुई। जनता ने अनुभव किया कि लोकतंत्र केवल पुस्तकों तक सीमित हुआ सिद्धांत मात्र नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की जीवन शैली है जिसमें राष्ट्रहित सर्वोपरि है। आपातकाल से सबक लेने के बाद लोगों ने यह अनुभव किया कि हम वंशवाद, परिवारवाद और भाई भतीजावाद की राजनीति से ऊपर उठकर देश की राजनीति को सर्वोपरि रखेंगे। आपातकाल से सबक लेने के बाद हम युवा नेताओं को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम ना तो कभी राज्य का चयन करेंगे, ना तो हम कभी किसी तख्त और ताज का मोहताज रहेंगे, ना तो हम कभी किसी कुर्सी का ताज रहेंगे। हम तो बस यह ताज रखेंगे कि हर दीन दुखी मन में उमंग भरी है, जिस देश में गरीबी की, बेरोजगारी को और सन 2047 में भारत को विकसित बनाना है, उस वर्ग के ऊपर काम करना है। अंत में बस इस युवा तरुणाई को एक संदेश देना चाहूंगा कि जब हम अपनी जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय की राजनीति से ऊपर उठकर देश को सर्वोपरि रखेंगे, भारत भाग्य विधाता होने पर गर्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Judges, please note that was participant 31. Next up, we will be taking participant 8 once again, Riya Jaiswal. Judges, please note that we will be taking participant number 8, Riya Jaiswal again. Freedom is like air. We don't notice it when it is there. As I say, freedom is like air. We don't notice it when it is there. But the real movement is we realize the worth of it when it is not present. If one day you were told, do not question, do not criticize, do not speak. For many years, this was not just reality, but for us, it was just an imagination. Respected judges, teachers, and my dear friends, 50 years ago, in June 1975, India faced a movement that tested the very soul of its democracy. The emergency that lasted for 21 months, where every freedom of speech, freedom of press, as well as the rights of every citizen was suspended. The Prime Minister invoked Article 352 that challenged during our elections. So opposition leaders
J.P. Narayan as well as Moraji Desai were arrested. Newspapers were censored as well as followed civil liberties were crushed. And overall, mainly 1 lakh people were denied from attending the seminars. But history also shows us courage, right? People like journalists as well as activists and students did not give up. The JP movement empowered the people that with the power of the people, the Indian democracy can be relocated. So as the youth of India, I would like to say that it is our responsibility to be vigilant because there are misusing of laws as well as there are illegal sites which are being happening. So it is our responsibility to be vigilant. Thank you. Judges, please note that was participant 8, Riya Jaiswal, who we took again. I will now hand over the session to Chetan sir to take it over from here. I think we have finished with all of our candidates. Thanks to all the participants for their excellent performances. Thanks to judges for taking out your precious time and compiling all this. I think if you give us around 15 minutes, I'll be able to compile the result and we'll be able to announce the top 10 candidates now itself. We have time. So we'll do that. Just we'll take a break of 10 minutes. We'll take a break of 10 minutes. We'll compile the list and then we'll meet you again. Okay?
Okay, participants, kindly take your seats. Before announcing the top 10 candidates for today, I would like to present a memento as a token of love and appreciation to our judges for spending their valuable time from their busy schedule today. So I'll request Satish sir to hand over the memento as well as the appreciation letter. To our first judge for today, Ms. Nelly Rodriguez. Mr. Nupendra Desai. Mr. Dheeraj Harmalkar. To Ms. Richa Vaz. The very own Father Muslim. See, all the participants will be getting participation certificate from My Bharat portal. The issue is Tribal sir is retired there, so there is no person to sign on the certificate. That's why certificates are on hold. So once a person is appointed as a director for My Bharat, you will get your certificate. They will probably send an email to you. I hope you all have registered your email with us, right? So you will get certificate at time. Now we are supposed to select top 10 candidates from South Goa who will be participating at a state level in the assembly. The dates will be announced soon. Okay. Apart from this top 10, 5 will be the remaining. The next 5 will be reserved. Okay. In case if any of the first candidate cannot participate in the state level, they will be called. All right. So first I will call out the candidates who are in who will be kept on hold. That is from serial number 11 to 15 to kindly come here. Please note you all are kept on hold. Okay, unless and until there is some emergency, you will be called later on. So 11 place goes to Dev Kalangutkar. 12th is Alan Polly. Is there? 13th is Shubham Desai. 14th is Priya Wallace, Priya Wallace, she's there. And 15th is Pranav Gaukar. Yeah. Coming to the top 10 candidates of today, I'll start from rank 10. The 10th place goes to Shama Ghatwar. Light is off, I think. 9th place goes to Firdaus Sayyed.
8th place is for Roshni Sharma. The 7th is Vijay Kumar. 6th place goes to Bosco. 5th place goes to Tamanna. 4th place is to Bhargavraj Rani. 3rd is to Mr. Neeraj Kumar. 2nd place goes to Mr. Abhigyan Roy. And 1st place goes to Mr. Braj Mohan. You all can also look. You all can also. Sir, keep the podium visible. Podium is required. Or the banner is not enough. Banner, yeah, banner is fine. Okay, banner is fine. Banner is coming there. Yeah. Yes. Boy, come in front. Come in front. Please come in front. Come in front. Yeah. मतलब वही रीति का हार्ट लेना पोडियम कार्ड ले रही But now banner is visible. Yeah. This should be also visible. So come in this. Ma'am, yeah, you do. See, now you have to perform at the state level. See, you are representing South Goa at the state level. So your performance should be. Last time I think you reached national. I think you are known from South Goa, right? So those are not registered. Those whose name was not there in place. You need to please ensure that go back and register again. The data will be going to ministry. So please register. Morning and the attendance sheet. Your name was not there. You never answer. Contact. Not so much.